Hello everyone. Welcome to DM Your Mentors. As you all know that we have completed our FR syllabus and we are on to our revision phase and we will be solving one more ratio analysis question. Name of the question is Pastry Company. So without wasting much time, let's directly jump onto the question. I hope my screen is visible. Yeah, it's visible. Yeah. So I'm not pasting the question here. Let's read from it itself. Page number is 158. Pastry Company. Question number 440. You opened it, right? Yeah, I have Mhm. opened it. Yes. So let's start. Pastry companies considering the acquisition of a subsidiary in a catering industry. Hmm. Two companies have been identified as a potential acquisition, and the extracts of their financial are given below. Basically, pastry companies planning to acquire one more subsidiary in the catering industry, and the financial of both the company has been given. Cook company and Duff company. We have been given their P&L and their financial position, assets and liabilities. Let's read the requirement so that पता लग जाए कि what information we need to complete that requirement. Okay. First, adjust the relevant extract from Duff Company financial statement to apply the same accounting policies as Cook Company and recalculate Duff Company's ratios provided in note number 5. Firstly, do you understand the requirement? क्या पूछ रहा है? What the question wants to ask? Like the same policies that have Cook Company followed and made Mm-hmm. that statement, Mm-hmm. Mm-hmm. we have to do the same For Duff technique Company and and for Duff Company and recalculate their all ratios. recalculate which company's ratio? Duff Company's ratio. Duff company. Okay. And which ratios do we Uh, have to calculate? Note 5 Note 5 gross and gross gross profit or GP, OP, and ROC. Okay. ROCD. Yeah. Perfect. Perfect. Nice. That's all. For this question, I think you will be provided uh, with the Word file most probably, but they can Okay. give Excel as well. I'm not sure. But for अगर Excel होगा तो it will be easy. ठीक है. So I think Excel देना चाहिए. We have Excel, so we will be solving Excel only. Firstly, what the question is trying to ask, we have to adjust Duff company's financial statement पहले तो कैसे Hmm. same as accounting policies of Cook Cook company. Company. तो हम पहले financials दिए हुए हैं, we'll be recalculating as per Cook company's accounting policy and जो recalculated financial statement होंगे उसका ratios निकालेंगे अब Duff company. ठीक है. Right. Right. Duff. Let's write adjust because we are adjust. Right. Let's go line by line. First is revenue, cost of sales, then GP, then OP, OE, then OP, then IE, EBT,
IT, इनकम टैक्स, VAT, ठीक है। नॉन adjusted adjustments and adjusted final figure, ठीक है। Can you tell me the amount for revenue non adjust of the on this one? 16300 for Duff company, right? Yes, yes, yes. Yeah. Cost of sales is 8,350. 8350. Okay. GP is 7950. Okay. 4725. Oh, negative 4725. Okay. 3225. Negative Neg 3225. negative 200. Okay. 3025. The same PBT should be 200, na? No, it will be operating profit. Okay, operating is 3225 positive. Hmm. Take care. Huh. I'm just bringing the formula. Take care. 780 negative. 780 and this plus 2247. 224. Yeah. PBT and that profit after tax. Okay, we have taken non-adjusted figure. Let's read the notes so that we can apply the same accounting policy. Oh, we have financials as well. Financial statement. This is what P&L. Now balance. Balance sheet में what we have been given. NCA, non-current assets. PPE, equity, Valuation surplus. share, people, RE, revaluation surplus, RS, RE, and then non-current liability and Yeah. loan. PP, what is the balance of PP? 68,500. Fixed rate 500. Share capital Share is capital is 1,000. 1,000. RS, Surplus is 30,000. okay. Retained earnings is 30,000 or 30? 30,000. Uh, then return earning is how much? 2,600 and loan notes is 5,200. Okay. Now let's read the notes. First, note number one. Both companies are owner managed. Okay. Duff Company operates from expensive city center premises, selling to local businesses and the public. Cook Company कौन है? Cook Company is a large wholesaler selling to chains of coffee shop. ठीक है? Cook Company operates from a number of low-cost production facilities. Note number. इसमें तो कुछ accounting policy था, we didn't got any hint. ठीक है क्यों accounting policy? ये तो खाली company background था. Right. Note number two. Our year end is from 1st of October to 30th September. So on 1st of October, at the start of the year, Duff Company revalued its property for the first time, resulting in a gain of $30 million. The
property has a remaining life of 30 years from 1st of October. Duff company does not make a transfer from evaluation surplus in respect of excess depreciation. इसका मतलब क्या है? What does line mean? इसका मतलब कि uh, if we have revaluation surplus of 1,000 in our books, we have recorded, and we have depreciation as well of 500, for example. Hmm. What do? We do net off. We set off our depreciation with revaluation surplus, and the excess amount we transfer to retainer. इसका But मतलब that क्या is हुआ? for loss, na? That is not for depreciation. No. What I'm trying to say, for depreciation as well, most of the company used to do is that if they have revaluation surplus previously recorded for that particular asset, and in current year we are charging depreciation. So what they do, they say that oh, we already have revaluation surplus in books of account for this particular Mhm. asset, and we are charging the, for example, we are getting the depreciation expense current year. So it's better to net off our revaluation surplus Hmm. with the depreciation amount. So they Okay. don't show the depreciation in P&L. They simply set off. Right. But question is simply saying there is no such policies applied by Duff company. Okay, there is no concerning thing. My voice is clear to you, right? Yeah, yeah, it's clear. Cook company uses the cost model now. We have been introduced with the accounting policies of Cook company so that we can apply Hmm. to Duff company. Hmm. Cook company uses the cost model to account for its properties, and Duff company uses what? Which model? It's not given. No, it's given. No. Duff company revalued its property for the first time, resulting in a gain Yeah, of yeah. this. Yeah. Revaluation model. So they apply revaluation model. Cook company is applying cost model. So mismatch. We have Hmm. to set it off. So Right. Duff company and Cook company charge all depreciation expense to operating expense. Okay. Hmm. So both companies doing the same thing. They what the amount of depreciation they got, they simply charge to operating expense. Right. So there is no difference. अगर कुक कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल रही है and Duff company is charging in operating expense, so it's compulsory for Duff company to do the same, charge depreciation to cost of sales rather than operating expense, because question is saying we have to apply same accounting policy of Cook to Duff company. ठीक Right. है? Right. Okay, so before proceeding on third one, let's figure it out. Second one, note number two, adjustment. Okay. Okay, if the question is saying on for if first thing, the extract, the financial that we have given is at as at 30 September 2007, मतलब already being adjusted, पूरा बनाया हुआ है ये financial, Hmm. correct, right? तभी Hmm. पूरे साल का दिया हुआ है. Yes. इसका मतलब जो भी, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन साल की शुरुआत में हो गया था. इसका मतलब सबसे पहला, if somebody asks you, Mike, what do we do, what entry, accounting entry do we pass during evaluation? What are you going to say? First, in revaluation surplus, just listen to me carefully. Okay? Firstly, in revaluation, asset increases, Hmm. revaluation surplus comes in the picture. Yes. Okay, this is general entry. One more thing is that most of the student misses that अगर revaluation surplus आया, इसका मतलब उतने अमाउंट का एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया पीएनएल में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी प्रॉपर्टी 100 रुपी कॉस्ट मॉडल में अप्लाई करते तो 100 रुपी की थी, बट हाँ. बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 120, तो मैं नेक्स्ट ईयर 120 पे चार्ज करूंगा ना डेप्रिसिएशन. इसका मतलब 120 पे चार्ज करूंगा, मतलब 20 का पोर्शन जो एक्स्ट्रा हुआ है, दैट इज द Hmm. एक्सेस डेप्रिसिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन. करेक्ट? Yes. Yes. करेक्ट ना? तो वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कुक कंपनी क्या कर रहा है, दे अप्लाई कॉस्ट मॉडल. Hmm. तो सबसे पहले हमारा चैलेंज वही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस हटाना, असेट की वैल्यू 30,000 से कम करना, एक्सेस Depreciation. डेप्रिसिएशन को हटाना. कहाँ से? एक तो पीएनएल प्लस रिटेन अर्निंग, क्योंकि Hmm. पूरा पीएनएल रिटेन अर्निंग में चला गया होगा. हाँ. ठीक है? तो दिस इज द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन. तो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले दोनों कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस से चार्ज करें, तो लेट्स एडजस्ट विद ऑपरेटिंग. सबसे पहले तो वी रिड्यूस 30 रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय 30,000, राइट? हाँ.
सिंपल ही एंट्री। सेम विद दिस ऑल्सो, असेट की वैल्यू 30,000 से कम करेंगे। करेक्ट ना? रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्यों हटा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस से तो डेप्रिस नहीं। नो, डोंट गेट कंफ्यूज। जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है वो एक्चुअल में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे हाँ। पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस ही हटा दिया। यस। ठीक है, हाँ। अब राइट। बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 30,000 का आया, डिवाइड बाई 30। क्यों 30? क्योंकि यूजफुल लाइफ इज यस। 30। क्या? थर्टी यूजफुल लाइफ। थाउजेंड डिवाइड बाई 30, हम्म। तो 1000 का एक्सेस हुआ। डेप्रिसिएशन, हाँ। तो वो ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? बिकॉज ऑलरेडी डिडक्टेड है। करेक्ट, तो हमें नेट ऐड करना है। नेट हाँ, नेट प्रॉफिट में हमने डिडक्ट करके ही ईयर एंड की पूरी स्टेटमेंट बनाए, तो वी हैव टू करेक्ट। रिवर्स इट। करेक्ट करेक्ट। तो फिर पीपी में से भी निकालेंगे ना डेप्रिसिएशन? करेक्ट करेक्ट, वो भी करेंगे पीपी से भी, क्योंकि 1000 का एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया होगा। हाँ। करेक्ट ना? तो हाँ। 1000 से ऐड करेंगे उसको, प्लस, हाँ। पीपी को। हम्म। करेक्ट। अब हम्म। बैलेंस शीट का सेट कर दिया। अब जाते हैं पीएनएल में। पीएनएल में क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। राइट। हम्म। 225, 2225। और कोई एंट्री पीएनएल में नहीं होगी, क्योंकि पीएनएल में जो एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा वही होगा। हाँ। ठीक है। परफेक्ट। तो दिस इज द एंट्री फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट मॉडल आने के लिए। सारा डेप्रिसिएशन हटाया, रिवैल्यूएशन सरप्लस हटाया, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर। राइट। ठीक है। हम्म। लेट्स गो टू नोट नंबर 2। बट एट फर्स्ट इंस्टेंस नहीं समझ आता कि क्या करना है, बट ड्यूरिंग डिस्कशन इट गेट्स इजियर। राइट। हम्म। नोट नंबर 3, कुक कंपनी charges the amortization of what? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें amortization क्यों यूज किया? बिकॉज दिस इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। करेक्ट करेक्ट। तो amortizes R&D कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कुक कंपनी की ये पॉलिसी है। बट डफ कंपनी क्या कर रहा है? डफ कंपनी ऑपरेटिंग। चार्जेस द सेम कॉस्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम्म। तो हमें क्या करना है? जो करंट ईयर में ऑपरेटिंग में चार्ज हुआ होगा उसमें से प्लस कर देंगे, क्योंकि पहले माइनस किया था, अब प्लस कर हाँ, देंगे। प्लस कर देंगे। तो नील हो गया, अब उसमें नील हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके ऐड कर दो। राइट। करेक्ट, यही करना है। ओके। तो ऑपरेटिंग में चार्ज किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे? ऐड। प्लस करेंगे, हाँ। ऐड। नहीं, ऐड बट हाउ? why non-adjusting is showing me this? I mean, technically it should be 4745 na, as per. अच्छा, I'm adjusting it from operating. Sorry, I have to do from operating expense. I'm adjusting it from operating profit. So it's already negative 1000, फिर 1000 प्लस में हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना? माइनस में तो मैं प्लस में कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे को नील करना है इसलिए। वरना ऐसा हम्म। कुछ लॉजिक नहीं है कि अच्छा मैं प्लस कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ। नहीं, नहीं। गेटिंग राइट? मेरे को इफेक्ट को नील यस। करना है। अगर अगर मैंने यहाँ पे ये किया होता, फॉर एग्जाम्पल 4725 किया होता फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में करता क्योंकि मुझे हटाना था। करेक्ट, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। हम्म। क्योंकि अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर सी, तो वो मैंने सिर्फ सम का ही लगाया हुआ है। बट अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं करी होती, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट पॉजिटिव में ही होता, तो वो तो प्लस हो जाता। तो प्लस नहीं होता, मैं इसी ये माइनस दिस ये करता। हाँ, हाँ, वो अलग है, हाँ। ठीक है, तो हाँ। सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क आ रहा है, वरना ऐसा हम्म। नहीं कि मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। इफेक्ट हम जो हम्म। डिस्कस कर रहे हैं वही दे रहे हैं कि हमें राइट। हटाना है तो हम हटा रहे हैं, प्लस करना है तो प्लस कर रहे हैं। ठीक हाँ। है। राइट। राइट। अभी इट वाज इन नेगेटिव, लेट्स पुट इट नेगेटिव। ठीक है, दिस वुड बी पॉजिटिव देन।
ठीक है। अब यहाँ से नेट किया तो यहाँ पे जाके 1200 कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस करके प्लस करने के लिए मैं माइनस में कर दिया, माइनस माइनस। प्लस। बट इतना कंफ्यूजन हो तो लाइक इसमें अगर कंफ्यूजन नहीं है ना, देयर इज नथिंग कंफ्यूजन। नो मतलब लाइक नॉर्मली, बट ये नेगेटिव में दिया है तो अपने को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। नेगेटिव में दिया तो अरे हमें तो सी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व करना ना, नेगेटिव में दिया है तो हम्म। अगर मुझे कुछ चीज नेगेटिव में ऐड करनी है तो मैं नेगेटिव में ही लिखूंगा ना, ताकि माइनस माइनस हाँ प्लस हो जाए। अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हटाना होता तो मैं प्लस में करता, तो माइनस प्लस माइनस। राइट। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वैसे। हाँ वो थोड़ा प्रैक्टिस से हाथ बैठ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट राइट। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर दी। हम्म। अब नोट नंबर 3 पे चलते हैं। नोट नंबर ओके, नोट नंबर 3 इज नोट नंबर 4। द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट बेसिकली व्हाट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में पता लगा that cook company paid its director total salary of 100,000, $110,000, whereas Duff company paid its director total salary of 560,000, 560,000. So what do you think, Mike? Is it a accounting policy or it's just a presentation? And presentation is what? It's a company to company depend करेगा ना, ये तो किसी को इतना पे करना है, किसी को इतना पे करना है। There is no accounting policy, standard accounting policy नहीं है ना। नहीं है सब हाँ। डायरेक्टर की सब डायरेक्टर की सैलरी सेम थोड़ी हो सकती है। नहीं होती हाँ। करेक्ट। हम्म। एंड वी हैव लर्न कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं। हम्म। What are accounting policies? Policies are the where we retrospectively change, it's like अगर इस साल में फॉर एग्जांपल अगर That is ठीक डेप्रिसिएट। है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है, बट आई एम आस्किंग व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब हाउ डू वी डिफाइन। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज व्हाट, समथिंग व्हिच इज स्टैंडर्ड, कि इस तरीके से यूज करना है, ये मॉडल यूज करना है। स्टैंडर्ड हैज गिवन पॉलिसीज कि एनी दिस आर द पॉलिसी। फॉर एग्जांपल for PP we have revaluation cost model, for inventory we have FIFO LIFO model, which one is applied, which one is not applied. You're getting right, so यस these are the राइट। policies. हम्म। So in payroll there is no accounting policy because payroll can be differ कंपनी कंपनी, कितना डायरेक्टर को पे करना है, किस बेसिस पे करना है, आर्ली करना है, कितना इन्वॉल्वमेंट होगा डायरेक्टर का किस बेस। तो देयर इज इट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव थिंग। हम्म। करेक्ट। what is provision now, if I ask you what are provision, is it accounting policies or estimate? इट्स एन एस्टिमेट। Correct, because in provision we applied our professional judgment and based on that we derived on a particular estimate that this is the number यस। that's going to be payable in future or receivable depending upon the circumstance. राइट। Okay. Nice. Okay. And we have in note number 5 the standard. तो फिर मतलब इसका कुछ भी नहीं होगा लाइक जस्ट इग्नोर इट। हाँ, don't ignore it. Don't ignore right now. रिक्वायरमेंट ए में अभी जरूरत नहीं है, इन बी जरूरत में, इन बी वी कैन इट कैन बी यूजफुल इन रिक्वायरमेंट। अभी तो ओके। 6 मार्कर है ना, हम्म। या 14 मार्कर लेफ्ट। So yeah, we have applied, we have gone through with the notes, each and every note, and we have adjusted the accounting policy of Cook to Dove. बाकी किसी में चेंज नहीं है तो वो सेम टू सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस टू दिस, that will also stay. Yeah. So we have zero changes. Okay, okay. These are the adjusted. Let's now let's recalculate the ratios. First is what? ग्रॉस GP, प्रॉफिट मार्जिन। OP, then ROC. What is the formula for GP? रेवेन्यू डिवाइड बाय What ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय firstly, what रेवेन्यू। is the non-adjusted figure?
For like, The company 48.8%, then अच्छा, okay, 19.8%. 8.3. ठीक है, now let's recalculate. जीपी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस GP प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। divided by revenue of sale. ठीक है। एक सिर्फ डाउट है, लाइक इन बैक आंसर्स ये लोग राउंड ऑफ करके बहुत वैल्यूज लिखते हैं जो पॉइंट्स में आती है वो. हम्म। So is it allowed that we can round off in exam as well? हाँ, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम। इन सेक्शन सी क्वेश्चन यू कैन राउंड इट ऑफ। Okay. यस, so the first formula is GP 33% that I got. What is OP then? Operating profit divided by sales. 13 profit divided by 2, 400, give 5 percentage, and what then now? What is it? What is the formula for ROC? PBT profit before interest and tax Divide by divided by what? 1 minute. Sorry, I forgot. Divided by cost capital employed, na? Yeah. What is capital employed? We'll have to find it. Equity. We can Right. calculate capital employed. What is capital employed? Capital invested in the business. So it could be either equity plus loan note. Loan note से बढ़ Hmm. के नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्वियसली फाइनेंसिंग कंपोनेंट कंपनी में यूज हुई होती, दैट इज अ कैपिटल, राइट? Hmm. इक्विटी इज अ कैपिटल, रिजर्व्स आर कैपिटल, loans are capital. So equity plus non-current liability. Or what either way, what you can do, total assets Minus less current liability. current liability. हाँ. टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस के तो बचा क्या? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, Hmm. करेक्ट? It's तो equal. अभी we have equity and non current liability, so let's go with that. PBT, profit before interest and tax, divide by this. Let me put it in bracket, then learn, ठीक है? 41, that's what I'm getting. हमारा जो adjusted profit है ना, it's wrong actually. It's 4225. 4225. Revenue is Okay, okay, 16300. okay, 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 I've taken the wrong. I have to take this. This is the adjusted profit, na? Okay, operating profit, हाँ. then interest, then PBT, then tax, then PAT. Yes. Correct, right? Hmm. Yes, we got the right answer. Hmm. So we got this figure. So question A, first one is solved. We have been told
apply same accounting policy same as cook company, we applied and we recalculated the duff ratio. ठीक है? इसका मतलब just make trying to make you understand कि if duff company apply the same accounting policy same as cook, तो उसके ratios में फर्क आए, करेक्ट? लॉस प्रॉफिट कम हो गया, बढ़ गया। ठीक है? हम्म। ये क्यों? बेसिकली फर्स्टली क्वेश्चन में क्या लिखा था? पेस्ट्री कंपनी इज ट्राइंग टू एक्वायर, तो ऑब्वियसली कोई एक्वायर करेगा ना, तो दे विल थिंक कि इफ समबडी अप्लाई माय अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसके फाइनेंशियल में क्या फर्क आ रहा है, करेक्ट? फर्क आने के बाद जो उसकी एक्चुअल फिगर्स आ रही है, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? क्योंकि जो पहले फाइनेंशियल उसने बनाए होंगे, दैट कुड बी मैनिपुलेटेड, आई मीन नॉट मैनिपुलेटेड, उसके बेसिस पे बनाए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उस कंपनी को अपना जीपी इन्फ्लेटेड शो करना है, तो व्हाट दे विल डू, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में शो करना होगा, बट व्हाट दे विल डू, इंस्टेड ऑफ शोइंग इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, they will show in operating expense। तो उसकी वजह से क्या होगा? their cost of sales got reduced and GP got increased, करेक्ट? तो कभी भी कोई कंपनी अगर एक्वायर करती है, दे अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज टू द अनदर कंपनी एंड सी हाउ what is the financial performance based on their accounting policy राइट। rather than their accounting policy, करेक्ट? और भी सेंटिमेंट्स होते हैं फ्रॉम द कोर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? और भी एक्सटर्नल पॉइंट होंगे, उसकी ब्रांड में उसकी रेपुटेशन कैसी है, how much is company is into debt, what are their future plans, how they are going to accurate, what are their cash flows, their forecast, क्या चल रहा है, ठीक है? And if both company got merged, what kind of synergy effect do they will get in the market, उसका कस्टमर राइट। बेस कितना है, एक्वायर जिसको एक्वायर करेंगे उसका कस्टमर बेस कैसा है, अगर वो कस्टमर बेस मुझे भी मिल गया, तो बीइंग अ ग्रुप हम कितना ग्रो कर सकते हैं मार्केट में, तो ऑल दिस आर द sentiments and factors to acquire any company, ठीक है? इसमें पेस्ट्री कंपनी वही देख रही है। लेट्स गो टू रिक्वायरमेंट नंबर 2। based on this adjusted based on this adjusted accounting ratios, compare the performance of two companies what, who टू can कैन do. डू। योर आंसर शुड कमेंट, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपका कमेंट्स कौन से बेसिस पे होने चाहिए। योर आंसर शुड कमेंट्स ऑन डिफिकल्टीज ऑफ मेकिंग अ परचेज डिसीजन based solely on extract of financial statement and information provided in notes 1 to 5, ठीक है? हमें इस तरीके से अपना आंसर ड्राफ्ट करना है कि क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं इफ वी मेक परचेज डिसीजन, एक्विजिशन डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड दिस एक्सट्रैक्ट द नोट्स दैट वी हैव गिवन। तो सबसे पहले सी, अब इसके लिए प्योरली यू हैव टू राइट इन वर्ड फाइल इन योर sentences and your way, but I can help you out what you can add on to your answer. Firstly, ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब सबसे पहले थॉट क्या आएगा कि क्या क्या रीजन से ये सारे रेशियोज में इम्पैक्ट आया होगा, एंड देन वी कैन से दैट अच्छा, if this is the case then these are the seen because of those things डिफिकल्टीज आएंगी एक्विजिशन, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच टू राइट। 14 मार्क का क्वेश्चन है एंड यू हैव बीन गिवन 3 रेशियोज और एक कमेंट ऐड करना है, कमेंट आई मीन कमेंट लिखने की क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं इफ we make decisions solely on the basis of financial statement, ठीक है? सोचिए, तो टेक्निकली if I see 2 point per ratio, so 3 ratio 6 point and one for comment, so each point you will get 2 marks, ठीक है? Clear? For ओके। GP you have to write 2 points, two well explained point, you will get 4 marks to 2 marks per point,
And for operating margin, same, 2 points, 2 marks per point, 4 marks. Same ROC, and for comment you will get 4 points, 2 points rest. ठीक है? Although there is nowhere written all this, I'm just saying from my experience what I've been through with this syllabus. Right. ठीक है? In solution, if you will see, they have given marking as well. Yes, yeah, very into marking. Restated ratios एक्सपेंड किए उसके 6 पॉइंट, मार्जिन रेशियो डिस्कस किए उसके 6 पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिन रेशियो कौन से? जीपी मार्जिन, जीपी। ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन। तो टू, हाँ। उसके थ्री थ्री दिए हुए हैं लोग ने, 3 3 पॉइंट, 3 3 मार्क्स, तो राइट। 6 हो गए। हाँ। 4 पॉइंट फॉर आरओसी, दैट इज 10, एंड 4 पॉइंट फॉर डिफिकल्टीज एंड कंक्लूजन। डिफिकल्टीज। तो मैंने भी उसी तरीके से एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने मार्जिन को 3 3 पॉइंट दे दिए, इसका हम्म। आरओसी को, और डिफिकल्टीज एंड कंक्लूजन को 2 4 4 पॉइंट मार्क्स। ठीक है? हम्म। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वी कैन राइट। इस सबसे पहले तो राइट डिस्कस क्या क्या करना है, कुक कंपनी वर्सेस डफ कंपनी। ठीक है? सबसे पहले तो ट्राई टू राइट, स्टार्ट फ्रॉम जीपी। अगर जीपी इनिशियली कितना था, 32% था कुक का, और 48% था। डिफरेंट डिफरेंट हम्म। अकाउंटिंग पॉलिसी, बस जैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी सेम करी, हमें क्या पता लगा? लेट्स कम टू आवर सोल्यूशन। ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। वेट, लेट मी राइट द थर्टी टू कुक कंपनी का भी पॉइंट यहाँ पे 32.3, 23.3, 23.3, 18.8। 18.3। ठीक है? तो ऑलमोस्ट सेम हो गया। हम्म। तो आर। ये एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो इन before applying the same accounting policies, हम्म। it was a huge gap between GP and huge gap in GP in both the companies. But when we apply the same accounting policies, the ratios got almost same. Although we have seen that it's getting concluded that Duff company's GP margin is still more than Cook company by around 1%. Well, it could be because of thing that Duff company operate in expensive city center. Their margin would be a bit high because they are in they are into big malls, correct? City center में, तो obviously हम्म। their margin would be a bit high than local, यस। because we have seen कि अगर हम malls में जा रहे हैं, same chips का packet, if for example let's go to, if we are going to Alpha Mall and we found हम्म। Haldiram's outlet there, and let's compare to the local one. Local would be selling the same packet at 10 rupee, but Haldiram's outlet would be charging 12 rupees for the same packet. Same this concept is for like if we buy if we want to buy Coca bottle, so in store it will be for 10-20 rupees, Mm-hmm. But and in that same price अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके हम पी रहे हैं तो फिर correct, correct. they will charge at least 40-50 rupees more. Mm-hmm. Correct. Because they want to increase their margin. एक और point आता है कि if we went to any restaurant and we are ordering any coke, there is high हम्म। chances कि हम वहीं से ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा 12 रुपए, 10 12 रुपए सस्ता मिल रहा है बाहर से, तो हम बाहर से कोक लेके आएंगे and वहीं पे। तो that is also price that we are paying कि कस्टमर आएगा तो यहीं से ही पिएगा। दैट इज अ लॉकअप चार्ज। हम्म। करेक्ट? तो एक सेम कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एप्पल, व्हाट एप्पल इज डूइंग, एप्पल पेन, यू नो एप्पल पेंसिल। या। तो जो स्मूथनेस एप्पल पेंसिल देगा, वेल ऑल्दो दे आर लोकल पेंसिल्स इन अ मार्केट, बट जो फ्रिक्शनलेस एफर्टलेस एक्सपीरियंस जो एप्पल पेंसिल देगा वो कोई और नहीं देगा।
So kind of that we have logged up into that ecosystem. There are high chances that customer will buy Apple Pencil only, although it's expensive, but because of the experience that we are getting, they will we will buy from same entity. So that is a lockup. ठीक है? right. So ठीक है, we can assume, although there is not explicitly in the question is given, but we have to discuss ना, we have to draft in that way. We are just comparing, so that could be a reason. So we have to draft in this language only कि ऐसा नहीं लिखेंगे that must be a reason, must नहीं लिखेंगे that could be a reason because see notes तो कम से 5 है. कोई कंपनी किसी को परचेस कर रही है तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू काइंड ऑफ वी हैव टू डू कंपैरिजन, डिस्कस करना है. ये हो सकता है, वो हो सकता है, दिस कुड बी अ चांस, ये आउटकम हो सकता है, वो आउटकम हो सकता है. दैट्स हाउ वी हैव टू ड्राफ्ट एन आंसर. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल डू, ऑल्दो Duff company margins are high by 1%, it could be a reason that because the Duff company is into expensive city center market, they would have their margins would be a bit high compared to Cook one, because Cook companies firstly it's a wholesaler, तो होलसेलर का Hmm. प्राइस उसको थोड़ा सा They कम get मार्जिन कम discount. रखना पड़ता है, तो इससे हाँ. मार्जिन कम हो जाएगा. दैट कुड बी अ रीजन. Hmm. Right. ठीक है. Hmm. ऑल्दो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग दैट कोक कंपनी is maintaining almost same GP margin as Duff companies, although both company operates in different premises and different selling distribution point of view. But Coke companies, uh, Coke companies reducing their cost and managing their cost so well that and how they are managing their cost by uh, because their production facility is giving so much outcome kind of. Mm-hmm. तो उसकी वजह से उन्होंने कॉस्ट बहुत रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. दैट इज अ गुड थिंग. पॉजिटिव पॉइंट भी वी कैन ऐड ऑन कि कोक कंपनी भी अच्छा परफॉर्म ही कर रही है. Hmm. वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि वाई 1% इंक्रीज है, तो हम वो भी कंपेयर कर रहे हैं कि कोक कंपनी का भी इतना अच्छा क्यों है, ऑल्दो इट्स इनटू होलसेल सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ होलसेलर, Hmm. Hmm. बट स्टिल इतना अच्छा कैसे है? क्यों? क्योंकि दे आर मेंटेनिंग द कॉस्ट सो वेल. Right. ठीक है. एक हो गया जीपी का पॉइंट कि हमने कंपेयर किया कि ये हो सक ऑलमोस्ट सेम है, बट जब जब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी सेम की तो ऑलमोस्ट सेम हो गया. सेकंड पॉइंट क्या था, क्या रीजन था 1% इंक्रीज होने का भी? दैट व्हाट वी डिस्कस फ्रॉम द बैकग्राउंड से. ठीक है. Hmm. वन नाउ लेट्स गो टू ऑपरेटिंग मार्जिन. ऑपरेटिंग मार्जिन भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया, 23-25 हो गया. Hmm. यू टेल मी व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजेस दैट यू डिड हियर. Sorry, depreciation. डेप्रिसिएशन चार्ज हटा दिया ना, Hmm. इसके वजह से. Right. So that is the reason behind the change. Hmm. फिर विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन, ऑल्दो ये भी लिख सकते हैं कि विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन it is kind of difficult to draw explanation कि why operating margin has been decreased, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन का सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, ना कुछ बैकग्राउंड में है कि हम कुछ लिंक कर सकें. बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं बिकॉज द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव, डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन कि इतना जो वेरिएशन आया क्यों आया. ये क्वेश्चन में मार्क्स किस बेसिस पे देते हैं, लाइक ये थियरी वाले पार्ट में? बिकॉज क्लैरिटी ऑफ योर डिस्कशन, जितनी क्लैरिटी से यू आर डिस्कसिंग. राइट. करेक्ट. एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कंप ये सैलरी वाला पॉइंट कि कुक कंपनी इज पेइंग less salaries and Duff companies paying more salaries. Because of that uh, variation आया हुआ है. In a solution what they have written,
interesting point that the one thing which you have noted is that higher payment of salary in Duff company compared to Cook company, as both companies are owner managed. It may be that Cook company's management trying to take lower of the salaries in order to show increased profit. Correct, right? क्योंकि earlier क्या हम्म। था 23% था 19% था. हम्म। तो इट कुड बी अ रीजन कि कुक कंपनी ये कर रही फोर्थ। है कि अपना सैलरी पे कम कर रही है जिससे पेरोल कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए. हाँ, फोर्थ जो पॉइंट दिया उसमें वो सैलरी वाला दिया ना, जो हाँ अपने करेक्ट, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही ऊपर का भी यूज नहीं पॉलिसी हो में बट है। हम यही यहाँ पे यूज कर सकते हैं. हम्म। और एक राइट। एक पॉइंट हमने कुक कंपनी से यूज कर लिया कुक कंपनी के लिए कि भाई वो अपना सैलरी कम दे रही है, दैट कुड बी अ रीजन फॉर हायर प्रॉफिट मार्जिन. बट ऑल्टरनेटिवली इट कुड बी अ रीजन, हम डफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कुक कंपनी पे कम कर रही है डायरेक्टर को, इसका मतलब कि कुछ फंड बचा के रखी है फॉर री इन्वेस्टमेंट. बट डफ कंपनी, व्हाट डफ कंपनी इज डूइंग, बहुत बड़ा चंक सैलरी में पे कर रही है. करेक्ट. हम्म। तो उसके वजह से इफ यू विल सी इन देयर फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग बहुत ही कम हो गया है. कुक कंपनी का तो 18,000 रिटेन अर्निंग है, टफ कंपनी के पास 2,600 ही है. तो इट कुड बी अ मेजर रीजन भी, मेजर मेजर रीजन सैलरी पेमेंट बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सारे rather than being reinvested they are getting into director pockets, they are being getting paid. तो री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम फंड है. राइट। करेक्ट. तो दैट दिस पॉइंट यू कैन डिस्कस. फिर लेट्स जंप टू आरओसी. व्हाट इज आरओसी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हाउ मच रिटर्न आर वी गेटिंग फ्रॉम द कैपिटल दैट वी हैव इन्वेस्टेड. हम्म। ठीक है. वो दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। करेक्ट, 8.3% का. बट जब रिकैलकुलेट कर रहे हैं, रिकैलकुलेटेड फिगर्स है, वो और डिफरेंस बढ़ गया. वाई? क्यों? क्योंकि जो, व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम्म। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना प्रॉफिट था, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में व्हाट कम्स? इक्विटी, share capital, RS, RE, and loan notes, because those are our funds that were reinvested. But because we are applying the same cost model, the revaluation surplus is getting reversed. Because of that, our capital employed is getting decreased, and the profit and the ratio is getting हम्म। correct. क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो इज गेटिंग इंक्रीज. राइट। करेक्ट. वही लिखा या। हुआ है यहाँ पे. when looking at the return, just why I'm reading, explain तो मैं वैसे भी कर सकता था, but I'm making you read कि to understand the language how you have to write it out. When looking, see how they are drafting कि हम देखते ही पता लग रहा है. I mean, when looking at the return, ऊपर क्या लिख रहे थे? the one thing that we have note, इस तरीके हम्म। से. नीचे क्या लिख रहे हैं? हम्म। when we are looking, चीज एक ही है बट ड्राफ्टिंग सेंस. When looking at the return of return on ROC, the initial calculation shows that Cook company is making a much more impressive return from its long term 18% to 8.3%. Cook company is making good return, but this is completely reversed. This is completely reversed when the revaluation surplus is removed from Duff company's figures, as Duff company makes a return of more than twice that of Cook company, जो 43% हो गया रिवाइज होने के बाद. कि जब देख रहे थे इनिशियल इंस्टेंस, आई मीन जब हमने एडजस्ट नहीं किए फिगर्स, तो क्लियरली दिख रहा था कुक कंपनी का 18% था, फिर और डफ कंपनी का 8.3% था. बट बट जैसे ही 8.3% में से जो उसमें आरओसी था उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स किया, तो डिनोमिनेटर कम हो गया, रेशियोज शूटिंग, रेशियो इज गेटिंग शूटेड. इतना उसकी वजह, बढ़ने का कोई मतलब लाइक बैड रीजन है? बैड रीजन नहीं है. इट्स अ इट्स अ गुड थिंग. ये बढ़ अच्छा। गया हुआ है, बट सी कैपिटल भी तो उसी पॉइंट से कम भी तो हुआ है ना. ऑल, हाँ। तो रेशियो इंक्रीज होना डजंट ऑलवेज मीन कि इट्स गुड. फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस भी देखना जरूरी है कि किस वजह से डिक्रीज हुआ है. हम्म। बराबर.
Second point, the return is not due to high profit margin. Profit is same, उसकी वजह से चेंज नहीं हुआ है. रिटर्न क्यों चेंज हुआ है? Because of the reverse of revaluation circle. As the margin of two companies are similar, margins are same, with Duff company actually making lower profit from the operation. Agar if you will see the adjusted profit is 3245 PBT. 4025. बट एक्चुअल क्या था उससे कंपेयर करें तो 4365. सी although although profit of Duff company is lower than Cook company, but still percentage increase हो गया दोनों. A percentage of Duff company is more than Cook company. Why? Because of the RS reverse. Correct. यस. प्रॉफिट सेम नहीं है, उल्टा कम है. बट बिकॉज डिनोमिनेटर इतना बड़े परसेंटेज से कम हो गया, 30,000 कम हो गया, उसको वजह से रेशियो शूट अप हो गया. ठीक है. या. एक और पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है. द रीजन फॉर हाई रिटर्न. सी I'll suggest you to if you are doing रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन ना, when we doing, एक बार तो खुद से करनी है चीजें, एंड देन think point from our mind and then compare with the solution and make sure you read the each and every point of solution कि you understand the ideology कहाँ से सोचना है, किस तरीके से, and कितना deep सोच. An राइट. interesting point they have added is that the reason for high return on capital employed is that Duff company has much better asset turnover than Cook company. This is not because Duff company is generating more sales. The reason is that lower equity balance. Correct. उनका रेशियो इंक्रीज हुआ है, बट द रीजन इज व्हाट? Duff company has significantly lower equity balance due to having extremely low return earning relatively to Cook company. If you will see their, their return earning, just try to look at it. इतना बड़ा वेरिएशन आया हुआ है क्यों? सबसे पहले तो रिटर्न अर्निंग ऑफ कुक इज हाउ मच? 18,000. डफ का रिटर्न अर्निंग इज ओनली ऑफ 2600. हाँ. करेक्ट. तो इसका मतलब अगर हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स भी किया, पर उनकी इसकी इक्विटी भी तो, रिवैल्यूएशन अर्निंग्स भी बहुत ही कम है. करेक्ट. द रीजन फॉर हाई रिटर्न, वही एक्सप्लेन कर रहा है, द रीजन फॉर हाई रिटर्न ऑफ डफ कंपनी एंड कुक कंपनी इज व्हाट? The equity is much lower. Equity balance is extremely low compared to Cook company. और equity में क्या low है? Return earning is very low. This is concerning. राइट. और उसके ऊपर they are paying more salaries to their directors compared to Cook company. Although Cook company के पास तो बहुत अच्छा reserve है, but still they are maintaining the cash flow. They are just paying 110,000 to their directors. और इसमें they just have 2,600 of return earning. They don't have enough balance, but still they are paying 550,000. It's crazy. So this is a comparison that we have did of each and every ratio. Now we have to comment on the difficulties if purchase decision made solely fully on basis of financial statement. Firstly, looking at, if you ask me if I want to purchase the company or not. Firstly, मैं एक साल के फाइनेंशियल के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता. आई नीड प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल. कंपनी की रेपुटेशन I'll see how the company is performing. What is their share price, कितना volatile है share price, strength है कि नहीं कंपनी में, what are their weaknesses, what are they planning their plans, if they're doing, कोई complaint litigation है कि नहीं उसके regarding, how they are treating their customer, उनका customer base कैसा है, revenue growth and year on year growth कितना है. Correct. All Shark Tank questions यही चिपकाना है. तो फर्स्टली ये लिखा हुआ है, to see the answer. Without examining the market value of Cook company's properties, it will be difficult to assess which company is likely to cost more to purchase. One good point. Why? Yeah, why ये
क्यों ये पॉइंट लिखा हुआ है? बिकॉज इट शोज दैट, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द बैकग्राउंड दैट Duff company operate in where expensive city center, हम्म and Cook company is a wholesaler and and yeah, wholesaler, and operates with low value production facilities. So without examining the property values, it's difficult to say that which company is likely to cost more. For whom? For whom? Pastry company. Because pastry company is evaluating which company to purchase, Cook company or Duff company. Second, based any investment decision on single year financial statement is difficult as the impact of different accounting policies is difficult to assess. Correct? राइट From the information provided, एक और point लिखा हुआ है. From the information provided, it is unclear whether Cook company director are taking an unrealistic low salary or whether Duff companies are taking vaster greater market salary. एक और क्वेश्चन है कि क्या कुछ, आई मीन, जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो सैलरी ले रहे हैं कि उससे भी कम ले रहे हैं, कुक कंपनी के उससे भी कम ले रहे हैं. और एक और क्वेश्चन वाइस वर्सा एक और हो जाता है कि जो मार्केट स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा तो नहीं पे कर रहे वो लोग डायरेक्टर. जो एवरेज है वही डिस्कस हो रहा है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, it is unclear whether cook companies director are taking an unrealistically low salary or whether Duff companies director are taking vast or greater salary than average. क्योंकि उसके वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है ना. तो क्या रीजन है कि आप लोग एवरेज से बिलो पे कर रहे हो और कोई कंपनी में अबव एवरेज पे कर रहे हो और डबल ही पे कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन? So all these situations are getting creating difficulties for anyone to purchase. एक और पॉइंट यू कैन ऐड ऑन, because cook company Dutch companies operate in expensive city center. इसका मतलब कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगी जो लीज पे होंगी, लोन्स लिए होंगे उसके लिए बड़े बड़े. तो केयरिंग रेशियो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और उसकी तो बात ही नहीं हुई पूरे क्वेश्चन में. हम्म करेक्ट? यस और इवन इवन फ्रॉम फाइनेंशियल यू कैन सी कि उसका लोन नोट ज्यादा है. करेक्ट ना? लोन नोट्स या कितने से ज्यादा है? कुक कंपनी के 7300 है, डफ कंपनी के 5200 है. तो व्हाट इज द रीजन? because maybe they are paying more salary, that's why they are taking loan. और नो, लोन ले लेके सैलरी पे करना, डोंट एट दिस पॉइंट ऐसा. ये तो बहुत ही वेग पॉइंट होगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी करने पे आगे इसका मतलब कंपनी इज मतलब कंपनी इज गोइंग टू डाई सून. क्या अगर रीजन ये नौबत, अरे ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के पास कैश फ्लो ही नहीं है, लोन ले लेके सैलरी पे करनी पड़ रही है. इससे तो बंद कर दे. नहीं, लेकिन लोन लोन नोट कम होने का क्या रीजन है हो सकता? वो तो अनक्लियर है ना, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. gearing ratio, when we talk about purchasing any entity, gearing ratio also becomes an important part, but there has been no discussion of gearing. हम्म So it's important that we discuss gearing as well. right. So ये point भी we can add on. The conclusion is what? Overall, both companies appear to be profitable when performed well. Looking at previous company financials of both companies, difficult to taking investment decision. हम्म क्वेश्चन में और सोल्यूशन में और चीज भी दी हुई है कि व्हाट अदर पॉइंट दैट यू कैन ऐड ऑन. फर्स्ट कि comment that if Cook company operating profit margin would be lower if equivalent salary to Duff company were paid. अगर अगर डफ कंपनी जितनी सैलरी पे कर दी कुक कंपनी ने भी 560,000, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी गिर सकता है. हाँ करेक्ट? ये भी पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं कि अगर अगर इफ स्टिल यहाँ तक भी डोंट नो कि मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, बट वी कैन डिस्कस कि if same salary would have been paid by Cook company, then the profit margin would have been low. Correct ना? Comment on potential reasons for low return earnings. क्या रीजन है लो रिटर्न अर्निंग्स का?
अभी तो एक ही सैलरी वाला पॉइंट है, that's why we link with the return earning. Otherwise we don't have any point for return earning. Because question is silent, we have very limited information. That is the point that we have discussed. We have to discuss while making investment decision. We have to discuss what is the reason behind such low return earning. Where are we investing? What is the basis? That's what we have discussed. Then same gearing ratio, how much properties are being mortgaged, how much are owned, how much are on lease. Lack of prior year financial statement is difficult to assess the Right. performance of the company. So it's difficult to basically to it, only on the basis of first year, 1 year financial statement. It's difficult to take the investment decision. That should Hmm. be the conclusion. This is the entire question pastry company that I presented. And you have noted that there is in this question there is no concept that we have used, any accounting concept, just plain. We have used the concept of accounting policies. That's why we didn't adjust the salary part. But even if you see from the I mean common sense point of view, this was completely business acumen question. How much strong you are into business, Hmm. correct? So, and same attention to detail while solving the ratio analysis. अगर if you miss any adjustment तो रेशियो गलत आता है तो कंपैरिजन ऊपर नीचे हो जाएगा, Right. करेक्ट ना? So this is the thing that I want to discuss with you for the ratio analysis part. Going forward, we'll be solving more questions. So stay tuned and goodbye. Anything before leaving? Anything you want to ask? Anything you didn't understand? For this question, I understood everything. I feel that when I solve more questions, I Mm-hmm. get more clarity नहीं आ of. जाएगा but you got कि how to pick this type of question because in consolidation we know we have proper standard for that and we have to use those standard Mm, guidelines, but in this question very less standard will be used. mm, Com- Complete business acumen is going to be used and your explanation skills and your attention to detail, how well and good explain you are right, in questions, right, correct? right. ठीक है then, take care, goodbye.